सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एसओपी में देखी जाती है वो ऑथेंटिसिटी। इंडिया के एकेडमिक सिस्टम को मैं और अप्रिशिएट करने लगी वहाँ जाने के बाद। So we were dealing with all those audio files to figure out, can we detect if a particular song is going to be popular or not. So when you're hiring, discussion hota hai ki we really need to hire 5 women out of 100 we are hiring, or we need to hire 10 women out of 100. अगर इस स्टेटमेंट को बंद कर दिया जाए तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने शो में जिसका नाम है काम की बातें। आज हम बात कर रहे हैं सोनू मेहता से, जो कि एक हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं और माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के लिए काम करती हैं। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए वो 3 पीस प्रिंसिपल में बिलीव करती हैं। क्या है ये 3 पीस प्रिंसिपल और कैसी रही उनकी जर्नी, जानेंगे आज के एपिसोड में। हाय सोनू। Hi, Ankit. हाउ आर यू? I'm good. Thank you. How are you? आई एम गुड आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। नॉट ओनली यू आर द फर्स्ट फीमेल गेस्ट ऑन द शो, बट उसके साथ साथ तुम एकेडमिकली सबसे क्वालिफाइड गेस्ट हो अभी तक की। तुम्हारे क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि यू स्टार्टेड एज अ CSE स्टूडेंट इन IIT। वहाँ से ग्रेजुएट होते होते यू ग्रेजुएटेड विद प्रेसिडेंट्स मेडल। और प्रेसिडेंट्स मेडल जिसको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि पूरे बैच में जिसकी CGPA सबसे हाईएस्ट होती है उसको प्रेसिडेंट्स मेडल मिलता है, राइट? After graduating, you joined Microsoft as software developer. Then you went to Harvard to do your master's, the Harvard. And when you came back, you joined Microsoft Research. यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, so you started a part-time PhD program from IIT Delhi, right? तो लिस्ट खत्म नहीं हो रही है। तो उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, इतना सारा जो पढ़ाई लिखाई का ये लंबा चौड़ा जो तुम्हारा लिस्ट है, क्या हमेशा से ही पढ़ने में तुम्हारी रुचि रही है, शुरू से ही ऐसा था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी वेरी वार्म वेलकम अंकित। हाँ, पढ़ने में रुचि इंटरेस्ट शुरू से था मेरा। मतलब बचपन से ही इंक्लाइन थी, इसीलिए इसी की तरफ मेरा इंक्लिनेशन रहा। और ऐसा नहीं है कि कोई और कारण से, जस्ट दैट आउट ऑफ इंटरेस्ट। PhD भी करना यही है कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। तो हाँ, बस उसीलिए मैं कर रही हूँ। अच्छा, ओके। सो हम बात करेंगे कि जहाँ पे IIT से ग्रेजुएट होने के बाद यू नो जॉइंड माइक्रोसॉफ्ट एज यूजुअल, मैनी CSE स्टूडेंट्स डू, राइट? Yeah. तो व्हेन डू यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डूइंग अ मास्टर्स? एट व्हाट पॉइंट कि तुम जॉब करते करते डिसाइड करते हो कि मास्टर्स करनी चाहिए? राइट, तो मैंने मास्टर्स के लिए एक्चुअली अपने फाइनल ईयर में ही सोच लिया था। तो उस समय मास्टर्स के लिए GRE और TOEFL देना होता था। एंड आई टुक दोज 2 एग्जामिनेशंस इन माय 7th सेमेस्टर इटसेल्फ। तो मैं समहाउ आइडिया था मेरे दिमाग में कि मुझे मास्टर्स करना है, बट आई वाजंट श्योर व्हेन टू डू। So I just took those exams right in the 7th semester because those scores are valid for certain years, like 3 years or 5 years. I don't remember the exact time, but कुछ years के लिए valid होते हैं। So I just took those exams, but since I wasn't 100% sure कि मुझे masters करना है या नहीं, and I had an job offer at hand, I thought why not give it a try so that I can be really sure कि हाँ masters करना चाहिए या industry में रहना चाहिए। When I was working at Microsoft, the work was great, काफी अच्छा था. It was a great learning experience, but somehow I felt I lack in-depth knowledge of one particular field. तो उसको अगर मुझे somehow if I want to get that in-depth knowledge of one particular field, I think masters would be a good thing. तो सोचा masters करके try करते हैं, and that's how I decided right after 6 months into my job that I will apply for masters, and within a year I left for my masters. Okay. सो उसके बाद तुमने मास्टर्स अप्लाई किया, सो यू गॉट इनटू हार्वर्ड। सो हार्वर्ड, जिनको पता नहीं है हाउ बिग ऑफ अ डील हार्वर्ड इज, आई विल टेल सम नेम्स हु हैव ग्रेजुएटेड और हैव बीन टू हार्वर्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो इट इंक्लूड्स US प्रेसिडेंट बराक ओबामा, माइक्रोसॉफ्ट से बिल गेट्स, फेसबुक CEO मार्क जकरबर्ग, एक्ट्रेस नेटली पॉर्टमैन, और बहुत सारे नाम है पर लिस्ट खत्म नहीं होगी। इन सब जो पर्सनालिटीज की सेम कैटेगरी में आने में कैसा लगता तुमको? नहीं, I am nowhere close to them. I just graduated from the same university. ये है कि डेफिनेटली वहाँ का लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था।
हम्म। So even though I was there just for a very short time, like just for an year, I learned a lot from that university. And the good part of that university was diverse set of people and diverse set of schools. So Harvard University mein there are 12 schools, including law, medical, business school. And I got a chance to meet students from all those schools. So I think that was really good part about being there, meeting people from different countries, and also from different schools, not just engineering and tech based schools. So essentially, वहाँ पे तो school science school भी arts में combined है. It's like graduate school of arts and sciences as they say. So it was a very good mix of students even in our batch, and I think that was something very important about that university, and I learned a lot from them. Which is probably not true for a lot of other universities is what I have heard. So how to get into Harvard? हम थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए होती हैं when you were preparing to apply to go to Harvard. क्या क्या essential elements जरूरी होते हैं इसके लिए? Right. To be really frank, when I was applying, Harvard was not something that I was really aiming for. I was applying in general to like a bunch of universities, and I was very cautious about कौन सी universities में apply करना है. So some highly ambitious universities and some okayish universities where it was like very probable that I would get an admission sort of thing. So Harvard was one of those ambitious universities that I applied to. वहाँ admission के लिए क्या लेना होता है? I kind of discussed this with my professor once I was admitted there. Admission होने के वक्त when we were actually looking for candidates for the next year, हमारा professor से discussion हो रहा था, and that's when he explained what do they look for in applying, students who are applying. And of course, one of the important factors that he mentioned is उनका BTech performance. So wherever they are coming from, जो भी उन्होंने BTech में किया है, the CGPA and the reference letters, because usually अगर BTech से आ रहे तो reference letters भी university के professor से होते हैं, या 1 year into job है तब भी 1-2 letters तो professor से आते ही हैं और बाकी job से. तो letters of reference और undergrad performance matters a lot. Then I think it's about statement of purpose. If your interest aligns with what is being done in the university or professor के लिए. The SOP is more important for I would say PhD, because PhD में you have to work with that professor for 4 or 5 years. तो research interest का alignment देखना बहुत important है. Masters is more about exploration and coursework. तो इतना interest alignment नहीं देखा जाता है. So SOP I would say would be like a second thing. And third category would be like GRE and TOEFL scores. So ideally GRE और TOEFL score का कोई बहुत value नहीं है. It's all about your BTech performance and letters of reference from the professors. Yeah. So that's what helped me. Letters of reference और CGPA performance पे ही value करते हैं. फिर भी थोड़ा सा फैक्टर करता होगा कि तुमने एसओपी में क्या लिखा है. हाँ, डेफिनेटली वो मैटर करता है, ऐसा नहीं है. दैट्स लाइक सेकंड पार्ट. आई एम जस्ट सेइंग कि सबसे टॉप पे उन दोनों को कंसीडर करते हैं. एसओपी डेफिनेटली मैटर करता है. तो एसओपी अगर मैटर करता है, अगर 2 डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं जिनकी सीजीपीए सिमिलर रही है अंडरग्रेड में, लेटर्स ऑफ रेफरेंस भी अच्छे ही आए होंगे, क्योंकि अगर वो एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं तो लेटर ऑफ रेफरेंसेस भी अच्छे ही आए होंगे. तो ऐसा क्या देख रहे होते हैं एसओपी में कि वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा? अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो उनको किस तरह से अपना एसओपी ड्राफ्ट करना चाहिए? राइट. सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एसओपी में देखी जाती है वो ऑथेंटिसिटी. Because a lot of students, what they do is they would read SOPs of other students and then they would start writing it. तो कहीं ना कहीं उस SOP में authenticity चले जाती है. What they want is कि actually तुम क्या करना चाहते हो and how authentic are you. So that is one thing that's very important, and actually the professor complained about that. I mean, उन्होंने ये तक कहा था कि कई students professional से लिखवा के आ जाते हैं and we can easily figure out कि ये स्टूडेंट का लिखा हुआ है या प्रोफेशनल का लिखा हुआ है. तो पहला चीज वो हो गया. दूसरा, इट हैज टू बी वेरी क्रिस्प एंड सिस्टमैटिक. क्रिस्प इन द सेंस कि यू हैव टू कन्वे वॉट एवर यू वांट टू कन्वे इन लाइक द जो भी 1000 वर्ड्स या 1500 वर्ड्स का लिमिट है, एंड यू हैव टू बी वेरी सिस्टमैटिक अबाउट इट. बिकॉज इन जनरल किसी का भी अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा नहीं होता है. इफ यू राइट लाइक अ लॉन्ग लेटर, फर्स्ट पैराग्राफ में मैक्सिमम एम्फेसिस जाता है, उसी पे अटेंशन जाता है. उसके अगर वो ही बेकार है,
the reader kind of loses his or her interest और वो आगे पढ़ने में interested नहीं रहेगा. So the crux of your thing has to be in your first paragraph. Be clear about what you want to do, कैसे वहाँ पे interest develop हुआ, और I think हाँ इतना start कर दो तो that will give an idea to the professor who is reading कि student को क्या करना है, and then he or she will have that context in his mind. उसके basis पे वो आगे वाला पढ़ेंगे. नहीं तो if you just start with a I don't know, if you start with very wide view कुछ करना है and the professor won't have context, so he or she would be completely lost when they were reading the SOP. Next part is about your experiences. So अगर आपको let's say you want to do masters in computer science, why do you want to do that? वो interest कैसे develop हुआ, पहला चीज वो लिखना होगा. Second is about अगर इंटरेस्ट डेवलप हुआ है तो आपने कुछ काम भी किया होगा. जस्ट ट्राई टू शो कि क्या इंटर्नशिप किया है, क्या कोर्सेज लिए हैं, कोर्सेज में परफॉर्मेंस क्या था. सो सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस कि हाँ ये कोर्स में इंटरेस्ट है या इस फील्ड में इंटरेस्ट है और ये काम किया है. आई थिंक देयर इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन प्रोजेक्ट्स एंड मे बी इंटर्नशिप्स, ऑल दोज थिंग्स. इफ यू हैव पब्लिकेशंस एंड द लास्ट पैराग्राफ इज यूजुअली अबाउट ठीक है, let's say you join this university. What are your plans after that? Why do you want to join? I mean, if you want to join it, do you, want to explore this area? Do you want to work with this professor? Be specific about what you want to do. I think all these things, I would say, help a lot in terms of, your SOP kind of standing out from other students. इसके सिवा भी I think बहुत होंगे. But yeah, that's what I think I did. And I got to hear from my seniors and, people who I got feedback from. इसके अलावा हम अगर कोर्स की बात करें, तुम्हारे कोर्स के बारे में बताओ. वो क्या कोर्स था तुम्हारा जो वहाँ पे तुमने किया, उसके बारे में थोड़ा बताओ. हाँ राइट. सो हार्वर्ड में जो मास्टर्स प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस में नहीं होता है, कंप्यूटेशनल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग में होता है. उसमें भी दो तरह के प्रोग्राम्स हैं, MS, I mean SM and ME as they say. SM is like Master of Science. It's a course-based master's program. तो essentially a certain number of credits पूरे करने होते हैं courses के लिए, and then you get a degree. ME is like you have to do certain courses plus an additional thesis, some sort of research component to get your degree. So I was enrolled into ME program, which was with thesis, but then I decided to drop that and do just a course-based masters. Because at that time I wasn't sure if that thesis is going to help me or not. Course-based mein, my focus was more on, I would say, data science and machine learning. So all my courses were kind of related to that. Machine learning, which I did from MIT. And then some courses on systems, data systems. And also there was one course not one course, but there was one component that we took where it was all about doing a project with an industry there. So to kind of get an industrial exposure. You actually work with companies. So we worked with a company called Spotify. I think it is, it's a popular company. And it was all about music. So essentially, we were dealing with all those audio files to figure out, can we detect if a particular song is going to be popular or not. So that was our project. ऐसा भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई सॉन्ग पॉपुलर होगा या नहीं होगा, ये भी कोई तरीका है पॉपुलर मतलब जानने का. हाँ, मतलब हमने उस समय ये प्रॉब्लम डिजाइन किया, उनकी तरफ से ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया था. Because what they do is they would come up with a playlist and they would like to put these songs in the playlist in a certain order such that your playlist popular हो जाए. At that time they had no model. They had human experts to kind of put those songs in a playlist. We were trying to see if we can use a model to kind of do that. हाँ, और कुछ हद तक हमारे रिजल्ट्स काफी अच्छे थे. Okay. It's even interesting to know कि ऐसा किया भी जा सकता है with the help of ML और AI, right? क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई बैठा होता होगा, कोई देखता रहता होगा कि क्या पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, उसी को सॉन्ग्स को लेकर वो ऐड करता रहता होगा या फिर वो शफल करता रहता होगा सॉन्ग्स को कि एक जा रहा है एक आ रहा है, right? But you are saying that there is a proper method to detect or to predict basically कि क्या पॉपुलराइज होगा या क्या पॉपुलर होगा इन द लॉन्ग रन, राइट? राइट. सो डेफिनेटली ह्यूमन का रोल है, बट वी वर ट्राइंग कि इफ वी कैन समहाउ यूज दोस acoustic signals to predict that. ओके, काफी इंटरेस्टिंग. अच्छा, एक पॉइंट और है.
यू सेड कि MIT के साथ भी कुछ किया था, तो हाउ डिड दैट कम अबाउट, क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ हार्वर्ड, राइट? तो ये MIT बीच में कैसे आ गया? Yeah, so I think that's a good part about these universities. Harvard और MIT के बीच में I think कोई I think कुछ तो है, because of which they allow students to cross register at each other's, I mean, like at other places. So essentially, if I'm a student at Harvard, I can take as many courses as I want at MIT and a bunch of other universities. In universities का कुछ तो group बना हुआ है. And because MIT and Harvard in the same were in the same, I mean, are in the same town, it was easy for students to kind of do courses in both the universities. तो मैंने machine learning का MIT में किया था because I wanted to do that course and that course was not available in Harvard for that semester. So the only option I had was to do it MIT, and also I wanted to get like another university का exposure कि वहाँ कैसे पढ़ाया जाता है. So yeah, that's how I landed it doing my course at MIT. अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग बात है. इसके बाद तुमने बोला एक पॉइंट आया जब तुमने डिसाइड किया कि तुम गए तो थे एज अ थीसिस बेस्ड मास्टर स्टूडेंट, बट यू डिसाइडेड कि यू विल ड्रॉप इट, यू विल जस्ट डू पोस्ट बेस्ड मास्टर्स और तुम जल्दी ख़त्म कर लोगे, राइट? तो उसका क्या मोटिवेशन रहा होगा कि ऐसा तुमने स्विच किया? डिड यू वांट टू जॉइन द इंडस्ट्री एज सुन एज पॉसिबल? ऐसा था कि उसके बाद कॉलेज ख़त्म किया, हम इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं, या कोई और रीज़न रहा इसको जल्दी ख़त्म करने का? राइट, सो आई थिंक ये हमेशा से डिसाइडेड था कि मैं इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगी आफ्टर माई मास्टर्स, बिकॉज आई वॉज नॉट अ पर्सन हु वुड गो इनटू एकेडमिया. मैं कभी भी एकेडमिया के लिए इतनी एंथुसियास्टिक नहीं थी, एंड सो PhD was also not into my mind at that point of time. I wanted to do a PhD, but I think dedicating 5 years at a stretch in a country out, I mean, in a place which is not your country was difficult for me. तो मेरा ये इरादा था कि I will come back to India as soon as I do my masters. And when I landed there, I realized कि मैं अपना masters एक ही साल में खत्म कर सकती हूँ if I do all the courses and if I drop my thesis. So I talked to a bunch of people and I kind of realized कि अगर मुझे PhD नहीं करना है तो शायद research thesis का इतना बड़ा रोल नहीं है. I can just get done with my courses and go back to industry. Probably वो एक और साल वहाँ रह के उतना benefit नहीं होगा. So I just thought कि ठीक है, anyway I want to go back to India, why not just do all the courses in 1 year and go back as soon as possible. And that's how I just changed my degree from ME to SM. ओके, सो इसमें क्या फीस स्ट्रक्चर में चेंज आता है व्हेन यू डू दिस, या फीस स्ट्रक्चर सेम रहती है? क्या फर्क पड़ता है मतलब? गुड क्वेश्चन. या सो इसमें बहुत डिफरेंसेस हैं. फी स्ट्रक्चर में डेफिनेटली डिफरेंस आता है बिकॉज नेक्स्ट ईयर का फी मेरा पूरा मुझे पे नहीं करना पड़ा. अदरवाइज अगर मैं थीसिस भी करती तो मुझे कुछ मिनिमल अमाउंट पे करना होता है. तो काफी अच्छा कॉम्पोनेंट फाइनेंशियल बेनिफिट भी था एक साल में कोर्स करने का. बट नॉर्मली ऐसा होता है ना कि अगर तुम थीसिस बेस्ड मास्टर्स करते हो, सो यू आर पेड अ स्टाइपेंड, सम काइंड ऑफ अ स्टाइपेंड आल्सो. तो अगर कोर्स बेस्ड करते हो तो वो शायद स्टाइपेंड पे नहीं होता है यूजुअल केस में. तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ था इसमें? हाँ, तो हार्वर्ड का थोड़ा स्पेशल केस है. तो फर्स्ट ईयर में डेफिनेटली अगर आप थीसिस बेस्ड भी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, एवरी स्टूडेंट इज कंसिडर्ड द सेम. और फर्स्ट ईयर में कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है. फर्स्ट ईयर में वो लोग टीचिंग फेलो और रिसर्च फेलो भी नहीं बनाते हैं. दे डिस्करेज दैट बिकॉज दे वांट स्टूडेंट्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज एंड काइंड ऑफ मिंगल विद अदर पीपल. तो फर्स्ट ईयर में इन जनरल टीचिंग फेलो पोजीशन भी नहीं दिया जाता है. There are ways you can become a teaching fellow. You have to get an exception for it, and I got an exception for it. So essentially, आप जाके exception ले सकते हो कि I want to be teaching fellow, and you will have to say कि हाँ इतना load bear कर पाओगे या नहीं. But the problem is they would pay 1/4 of the actual stipend because they are heavily discouraging it. तो वो आपको teaching fellow बना देंगे, but they would pay like 1/4 of your the actual stipend that they gave. So I accepted that because even at that point of time, 1/4 of the stipend was also good enough to kind of cover my living expenses. So I just took it. ये first year का story रहता है. Second year में definitely stipend मिलता है, but still I would say it would not cover all your expenses. अगर tuition fee cover करेगा तो living expenses cover नहीं करेगा. Still a significant amount is something that you will have to pay from your own side. तो वो benefit था next year का. एंड दूसरा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स एक साल में नहीं करते हैं बिकॉज इट्स लाइक अ लॉट ऑफ कोर्स वर्क.
So even if people do a course-based masters, they would do it in 3 semesters. And there are 2 reasons for it. One is इतना लोड नहीं ले सकते. दूसरा कि 2 सेमेस्टर के बाद they get an option to do an internship in a university. So जिनको US में रहना है और सेटल होना है, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आफ्टर 1 year they'll just do an internship, वहां से कुछ तो प्री-प्लेसमेंट ऑफर मिल जाएगा, and then they will come back for 1 semester, finish their course and join those jobs. मुझे वहां पे जॉब भी नहीं करना था, which I was sure about, तो मैंने इंटर्नशिप का ऑप्शन भी नहीं लिया. ओके, सो इसमें हार्वर्ड जब ज्वाइन कर रहे होते हैं तो डू स्टूडेंट्स हैव एन ऑप्शन फॉर स्कॉलरशिप या पूरा ही यू हैव टू पे, हाउ डज इट वर्क? Yeah, so they have no option for scholarship at all. मास्टर स्टूडेंट के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है. रिसर्च फेलो जैसे टीचिंग फेलो जैसे मैंने बताया वो एक ऑप्शन है. You can do in campus jobs, जैसे just sitting in a library, and there were some kind of in campus jobs that you can do, but you won't be paid as good. So that would be just sufficient to cover your living expenses. Tuition fees anyway you will have to pay on your own. Yeah, so that's like a drawback. It's a very expensive university in that sense. So then it makes sense and it's an advantage to do your masters in just 1 year. क्योंकि तुमने जैसे बताया कि अगर कोई स्कॉलरशिप ही नहीं है तो हाँ, तो 1 साल में आप you can save a lot. हाँ, बहुत. 1 साल नहीं किया तो बहुत बचा सकते हो. Okay, so you then decided कि वहाँ नहीं रहना है, वहाँ कोर्स खत्म किया, you done with it. When you are coming back, what mindset do you have in terms of कि मुझे यहाँ पे वापस से जॉब मिल जाएगा, क्योंकि you have to recover your expenses as well, right? That thing is in your mind. वो तुम हमेशा दिमाग में रहता है कि यार अभी हम लोग ने खर्चा कर दिया है, आई बिलीव की फीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, सो वो भी कवर करना है, वापस आना है, जॉब भी लेना है. तो वो थॉट दिमाग में था या यू वर कॉन्फिडेंट कि यार इतना सब कर लेने के बाद जॉब तो हम ढूंढ ही लेंगे? नहीं, एब्सोल्युटली वो कंसर्न वैलिड कंसर्न है. और इट्स ऑल्सो ट्रू कि जो इंडिया में मिलता है वो यूएस के कंपैरिजन में इट वाज लाइक 1/10, एग्जैक्टली 1/10. सो इवन इफ आई टेक इनटू अकाउंट कॉस्ट ऑफ लिविंग और वो सब फैक्टर्स, वो कहीं भी कॉम्पनसेट, मतलब कहीं भी बराबर नहीं हो रहा था. बट I think in my mind I was pretty sure कि मुझे इंडिया लौटना है, because if I stay in the US for 3-4 years so I won't be able to come back. तो उस पार्ट में मेरा डिटर्मिनेशन था. So I just decided कि initially जो भी मिलता है I will take it, even though I know I won't be able to repay my loans and stuff immediately. I mean अगर US में रहते तो शायद 1 साल में या 2 साल में आराम से पे कर सकती थी. इंडिया में the same thing took like 5 years. So that difference is always there, but I think it's a call you have to take depending on what is your priority. So for me the priority was, it's okay, I won't live a luxurious life for 5 years, but I would come back to India and repay my loans in like 5 years. दूसरा ऑप्शन था कि यूएस रह जाते. Yeah, so I think it depends on person to person. Yeah, and also on the financial pressure that you have on your hand. Yeah. तो क्या डिफरेंट एकेडमिक डिफरेंसेस देखे तुमने व्हेन यू वेंट आउटसाइड और इंडिया में जब तुम थे? क्या एकेडमिक डिफरेंसेस थे वहाँ पे और यहाँ पे? इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ ओवरऑल एक्सपीरियंस एज वेल, क्योंकि काफ़ी लाइफस्टाइल एक्सपीरियंसेस भी डिफरेंट रहते होंगे. तो वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट दैट? कैसे डिफरेंसेस देखे तुमने? Sure, so academic differences definitely कुछ थे, and I would say actually इंडिया के एकेडमिक सिस्टम को मैं और अप्रिशिएट करने लगी वहाँ जाने के बाद. Because the thing is, whatever I have learned here, that actually prepared me very well to kind of, survive through that environment. ये तुम पहली पर्सन होंगे जो ऐसी बात कह रही होंगी. अगर तुम किसी से भी बात करो, अभी तक मैंने जिससे भी बात की है, सब लोग यही कहते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब है, जो है बाहर जैसा कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को. तो ये क्या डिफरेंस ऐसा लगा तुम्हें जो तुम बोल रहे हो कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और बेटर है एक्चुअली? नहीं, मैं मतलब ये नहीं कह रही कि बेटर है, पर कई चीजें इतनी अच्छी थी जिसने मुझे प्रिपेयर कर दिया कि मैं हार्वर्ड में सरवाइव कर सकूं. सो करिकुलम में कोई डाउट नहीं है, इंडिया का करिकुलम इज वन ऑफ द बेस्ट करिकुलम्स. जिस तरीके का कंटेंट हमें पढ़ाया जाता है बिगनिंग से, आई थिंक इट्स वेरी वेल प्लान्ड, वेरी सिस्टमैटिक. द प्रॉब्लम इज हाउ यू डिलीवर दैट और हाउ यू टीच दैट.
सो कई जगह प्रॉब्लम है, बट वो टीचिंग स्टाइल में है, पढ़ाने के स्टाइल में है. करिकुलम में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आई थिंक ये पार्ट जरूर था. तो आज वहां पे बस ये यूएस में ये फायदा था कि ऑफकोर्स करिकुलम तो था, ठीक ठाक था, उतना डिफिकल्टी लेवल नहीं था जो मुझे इंडिया में लगता था. इंडिया में रियली चैलेंजिंग लगता था. यूएस में आई थिंक इट वाजंट दैट चैलेंजिंग, बट आई थिंक द वे दे टीच इट, it's more practical, and you can actually apply it in real world. So wahan pe, and that's because they have access to a lot more resources than what we have. वहां पे बहुत resources हैं in terms of whatever you think, चाहे वो data sets हो, professor का network हो, कुछ भी हो. उन सब resources के कारण I think teaching is more fun, whereas it's not in India. But I think the kind of basics that you learn here, when you so I would say अगर theory में पढ़ रहे हैं, the kind of basics that you learn here, that actually strengthen your roots. वो बाद में practical experience के लिए बहुत useful हो जाता है. So if you compare two students, one coming from India, who's done his or her BTech from India and then going to the US, and somebody coming from a different country and then studying there, दोनों के बीच में clearly difference दिखता था. तो उस सेंस में बोल रही हूँ कि इंडिया का सिस्टम, इंडिया ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके भेजा था वहां पे. Did your industry experience also help? या अगर वो industry experience नहीं भी होता, कुछ स्टूडेंट हो सकता है कॉलेज में ही प्रिपेयर कर रहे हो हार्वर्ड जाने के लिए, so does it add मतलब industry experience? कुछ यूनिवर्सिटीज कंसिडर करती है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. आई थिंक कुछ जगह हेल्पफुल होता है. पर्सनल लेवल पे वो बहुत हेल्पफुल होता है, बिकॉज नाउ यू हैव अ बेटर पिक्चर कि कौन सी चीजें पढ़ाई में फोकस करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए. कुछ चीजें काम ही नहीं आती है रियल वर्ल्ड में, एंड यू कैन जस्ट इग्नोर देम. और कुछ चीजें व्हेन यू इग्नोर इन एकेडमिया, वो एक्चुअली इंडस्ट्री में बहुत हेल्पफुल हो जाती है. सो एट पर्सनल लेवल पे एज अ स्टूडेंट इट रियली हेल्प मी व्हेन आई वर्कड इन इंडस्ट्री. कई सारे ऐसे प्रैक्टिसेस थी जो मैंने इंडस्ट्री में लर्न किए, दैट एक्चुअली हेल्प मी व्हेन आई वाज डूइंग प्रोजेक्ट्स देयर इन द यूएस. तो वो एक्सपीरियंस हेल्प करता है. यूनिवर्सिटीज कुछ कंसिडर करती हैं, कुछ नहीं कंसिडर करती हैं. इट्स नॉट लाइक अ बिग डील फॉर देम. So when you came back to India, Microsoft was an obvious choice to join again, या और भी एक्सप्लोरेशन जारी था कि कहीं भी जहाँ मिल जाए वहां पे ले लेते हैं? हाँ, तो उस समय ये था कि जहां मिल जाए वहां लेना है, बिकॉज आई वांट टू गो बैक एंड आई डोंट वांट टू सिट एट होम, क्योंकि वो डिप्रेसिंग फेज हो जाएगा. तो the problem was when I was coming back, it was the year when Trump was elected the president of the US. तो लोगों को लग रहा था कि मैं इंडिया इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे यूएस में जॉब नहीं मिल रहा है, which wasn't the case anyway. बट इंडियन कंपनीज को एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था, और इंडिया में एप्लीकेशंस 10x राइज हो गई थी उस टाइम पे स्टैट्स के हिसाब से. In that case, getting a job was difficult. I mean, I applied to a bunch of places which I thought कि मुझे apply करना है. So I was more inclined towards research scientist kind of role या फिर research engineer kind of role. तो उसके लिए again options limited हो जाते हैं. So I applied to research labs like American Express Research Labs, Adobe Research Labs and Microsoft Research Labs. मैंने कुछ labs में apply किया था. I got offers from them. I just decided to go for Microsoft because I thought it's a safe option. I know that company. और रिस्क लेने से बेटर है कि मैं एक सेफर साइड जाऊं. इट्स अ स्टेबल कंपनी. आई नो इट. आई नो द कल्चर ऑफ द कंपनी. Even though the pay was not as good, but I guess the team that I was joining and that and the company, of course, the culture, I kind of knew that company. तो ये दोनों reasons से मैंने Microsoft join किया. Okay, so let's talk about a little bit your work at Microsoft right now in research. क्या डिफरेंस है अगर कोई एज अ डेवलपर ज्वाइन करता है माइक्रोसॉफ्ट, राइट? तो काफ़ी स्टूडेंट जो रिसेंट ग्रेजुएट्स होते हैं वो एज अ डेवलपर ज्वाइन करते हैं, राइट? माइक्रोसॉफ्ट आईडीसी जिसको बोला जाता है, राइट? या कोई जो स्टूडेंट है या जो प्रोफेशनल है वो एज अ रिसर्चर ज्वाइन कर रहा है, तो डिफरेंस क्या आता है दोनों रोल्स में? हाँ, राइट. सो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में अभी दो रोल्स हैं. एक रिसर्चर का है और एक रिसर्च एसडीई का है. सो आई एम लाइक अ रिसर्च सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड आई कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर इन आईडीसी, क्योंकि मैंने दोनों रोल्स में काम किया है. सो जनरल डिफरेंस, एंड बोथ रोल्स हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स. So research SDE is, I would say, it's a combination of a researcher and developer kind of role. And you have to put different hats at different times.
Essentially, it's like when you start a project, it's all about being a researcher. So essentially, कोई project start हो रहा है तो you will have to do research, literature survey करना होगा. You have to read the papers, understand कि इस space में अब तक क्या क्या हो चुका है, क्या क्या solutions implement हो चुके हैं, उनके क्या challenges हैं और कहाँ implement किया जा सकता है. So it's all about the research component. Once you're done with it, then I think you kind of start moving towards like a developer kind of role where you will see कि you'll come up with a prototypical solution, उसका prototype बनाएंगे, code करेंगे, so it's sort of like your development skills come into picture, but more from the research point of view. You won't really write like a product quality code. So I would say this is ये midway वाला project का stage है. Once this is also done and you get interesting results with your prototype, then I think you actually put the hat of a developer and you go ahead, write your solution in a product quality code so that you can ship it into some of the products at Microsoft or like a standalone product. तो research SDE का I think यही है कि they go through different cycles as the project progresses. And I think Microsoft may, I think in general, sub company mein, it's more about like flexibility. So they do not have very strict deadlines and deliverables compared to like a software developer at Microsoft. उनका strict deliverable होगा कि revenue को इतना % बढ़ाना है. हमारे पास ऐसा कोई डिलीवरेबल नहीं आता है. हमारे पास आएगा कि ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है. यू कैन टेक लाइक 1 year, you can take 2 years to solve it, but somehow we have to come up with a solution that works at this scale and kind of solves this problem. Immediate impact नहीं दिखेगा, long term problems पे we get a chance to work on, which is not possible for a lot of teams in IDC. So I would say this is like a key difference between the two roles. Mm-hmm. कोई ऐसी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मे बी फ्रॉम योर टीम या फिर कोई और टीम इन माइक्रोसॉफ्ट जहाँ से माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च टीम ने कुछ ऐसा रिसर्च करके कुछ ऐसा डेवलप किया जो यू वुड लाइक टू हाईलाइट कि कुछ ऐसा आया हो, बड़ी प्रॉब्लम डील की हो? आई सी. आई थिंक ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं बड़ी और छोटी जो डील की हैं. कई ऐसे सोल्यूशन है जो इंटरनली इम्प्लीमेंट हो गए. आई थिंक बाहर के कॉन्टेक्स्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक प्रोडक्ट जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया. तो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में एक ऐसी भी टीम है जो इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे काम करती है और उसके सोल्यूशन भी लो कॉस्ट सोल्यूशंस होते हैं. बिकॉज गिवन द डायनेमिक्स ऑफ इंडियन इकोसिस्टम, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव सोल्यूशंस भी नहीं डिप्लॉय किए जा सकते हैं. So one of that projects was called HAMS. I was not part of that. It's just that it came out from the same lab where I was working on. So HAMS is all about issuing driving license through a mobile phone. So essentially, what they do is, जो driver जिसको license लेना है, they will put a mobile phone in front of the car where the person is driving. car के आगे या एक particular जगह उसको लगा देंगे. And then the driver will be asked to kind of follow a particular lane, वो सारा parallel parking and all those things. And the mobile will be capturing the images of that driver. और उसके basis पे, the app will decide whether the license should be given to this driver or not. So it's like a very low cost solution because everybody has like a mobile phone with a camera. And that's all it is required. The camera would be mounted on the car. और उसके बाद it will be taking the videos and based on those videos, the decision would be made. थोड़ा बहुत और भी कुछ deployment होता है on the track, but I would say they are still very low cost. और ये solution बाहर आ गया because essentially it's all automated. There is no involvement of human. So biases हट जाते हैं. Human का involvement नहीं है तो process fast हो जाता है. And this system is actually deployed in Dehradun RTO. तो वहाँ पे अब driving licenses इसी से issue कर रहे हैं. A lot of driving licenses. And I think they're expanding it to other RTOs within India. So I would say this was one of the interesting research, like a very, very big problem, very quick solution and low cost. Okay, काफी इंटरेस्टिंग. So अब क्योंकि तुम पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में काम कर रहे हो, राइट? सो यू आर वर्किंग ऑन रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. जो तुम्हारा स्किल सेट है वो भी उसी तरह से डेवलप हो रहा है एज अ रिसर्चर, एज अ डेवलपर. व्हेन you have the prototype ready और तुम उसको वापस से बिल्ड करना चाह रहे हो, तो अब क्या मोटिवेशन आता है कि you go for a PhD, a part-time PhD, but a PhD? Right. So when I was working here at Microsoft Research,
मुझे रियलाइज हुआ कि अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे नहीं समझ आ रहा है. Also, a lot of people here at MSR have actually done their PhDs, so definitely उनका point of view मुझे कहीं ना कहीं inspire किया है या affect किया है मेरे decision को. But I kind of realized when they think about a problem, it's in a very different way compared to how I think about the same problem. मेरा लर्निंग भी नीड बेसिस पे होता है. सो लेट्स से आई एम गिवन दिस प्रॉब्लम, ये रिक्वायरमेंट है, आई विल लर्न दैट एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. बट पीपल हु हैव डन देयर PhDs, आई कुड सी दैट डिफरेंस कि हाउ वुड दे डिसाइड वेदर टू वर्क ऑन अ प्रॉब्लम और नॉट. You know, they could actually foresee some of the challenges, which is very difficult for me. So I think बिना PhD करके भी मुझे कुछ सालों के एक्सपीरियंस से ये समझ आ जाएगा. But I thought, why not do a PhD? Maybe I would, kind of learn more. And also, again, एक particular field में, I would be able to invest or kind of go in depth. So that inspired me to kind of do a PhD. I thought it would be like a more systematic approach towards solving a problem. The problem itself might not be important, but essentially जो experience होता है उस problem solving का, that plays a critical role once you land into a job after your PhD. So yeah, that's my motivation behind doing a PhD and part-time PhD because I did not want to leave my job. I was not sure कि मैं 5 साल research कर सकती हूँ या नहीं. तो क्या डिफरेंस आ जाता है? डज इट बिकम डिफिकल्ट टू डू अ पार्ट टाइम PhD क्योंकि पहले ही जॉब के 8 9 10 घंटे तुम दे रहे होते हो, राइट? तो हाउ डू यू फाइंड टाइम टू एक्चुअली वर्क ऑन योर PhD? किस तरह से मैनेज कैसे होता है? कोई क्लासेस होती हैं या क्लासेस नहीं होती हैं? बिल्कुल किस तरह से मैनेज होता है? So yeah, I think definitely it's a very difficult thing and I would say PhD is not a part-time affair. It's like a full-time thing. और यही चीज मुझे एडवाइजर ने भी कही थी और कई प्रोफेसर्स ने कही थी कि part-time PhD is not something they would advise me to do. कोर्स वर्क का से स्टार्ट करें तो पार्ट-टाइम PhD और फुल-टाइम PhD का कोर्स वर्क सेम रहता है. So when you're doing coursework, it's actually the same. In fact, you have double load because office का काम भी होता है and then you have to do your coursework. So when I was doing my coursework, the entire year was gone. I had no weekends. I had no time after job. As soon as I finished my job around 5 or 6, I would have to do my assignments and whatnot, preparing for mid-sems, end-sems. यही चलता रहता था. So of course, it's a lot of work during the coursework. But once that is over, I think then life could be easier if your research project aligns with what you're doing in job. So मेरे केस में that was like the benefit. So whatever I'm doing at my job is very much aligned to what I want to do in my PhD. So that I don't have to do that context switching again and again. और मेरा कई टाइम बच जाता है because ऑफिस में भी मैं वही चीज कर रही हूँ जो मैं रिसर्च के लिए करना चाहती हूँ. If you find such a setup, then part-time PhD is good. But अगर मैं ऑफिस में कुछ काम कर रही हूँ 8 घंटे and then I have to come and do research on a completely different problem, then I'm not sure if it's really worth doing it. तो जब क्लासेस तुम कर रहे होते हो, आर द क्लासेस ऑलवेज रिमोट? कैसे हो पाता है? मतलब क्योंकि यू आर डूइंग PhD फ्रॉम IIT Delhi, राइट? IIT Delhi, yeah. एंड यू आर सिचुएटेड एट बैंगलोर राइट नाउ. तो ये कैसे मैनेज हो पा रहा है? So I think मेरा स्पेशल केस था. यूजुअली क्लासेस रिमोट नहीं होती है. It just happened because it was COVID. Otherwise, classes you have to attend in person. जाके रहना होता है 1 साल या 1.5 साल, जितने साल में भी कोर्स वर्क करो. You have to be in campus, finish your coursework and then come back. So what some people do is, कुछ लोग ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं और अपना कोर्स वर्क करते हैं, या कुछ लोग ड्रॉप भी कर लेते हैं 1 साल के लिए. sort of they'll just take a sabbatical from office, do their coursework and then come back and join the company. तो वो ऑप्शन भी है. For me, it was good because I was at home and everything was remote. Office भी remote था, classes भी remote थी. So it just worked out. Yeah. But otherwise, I think university has requirements that the student has to be present in person. Most universities would have that requirement. Yeah. What do you do other than being a researcher? क्योंकि एक चीज करके, क्योंकि अब तुमने PhD भी ज्वाइन कर ली है और माइक्रोसॉफ्ट में भी एज अ रिसर्चर ही काम कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा रिसर्च हो जाता है. सो एक काफी ज्यादा टैक्सिंग नहीं हो जाता होगा एक टाइम पे? यू नीड something to एक बार थोड़ा माइंड कूल ऑफ करने के लिए. Definitely, and I do other things than research also. It's not that, yeah. So one thing that I really like is reading books, especially non-fiction.
and nothing related to technical. Mhm. It's all about, life, or maybe women, the problems that women deal in this corporate world. So a lot about women empowerment, and in general, self-help kind of books. So this is like one of the best things that I love to do. Of course, over the past 1 year, I didn't get a chance to read a lot of books because I was just busy doing my coursework and all those things. But that is one of my favorite pastimes. Other than that, I had learned piano some time back, so I used to play that. But again, पिछले एक साल में it has been lying around, and I am not really doing that. Easiest thing that I do is I just travel. So I really love traveling. So I would, travel to different places to kind of relax. Okay. So you talked about, studying about women, the problems that they face in workforce. Have you faced those problems that you kind of read about, or what kind of problems did you face? Would you like to talk about that angle also? Oh, of course, yes. So I would say, till I was in school, I really never thought that this is a problem. Because school में 50-50% ratio होता था, I never felt कि we are a minority community anywhere. When I came to college, IIT Jodhpur में, we realized कि हम minority हैं. दिखता था skew 1:10 है या 1:15 है. But I would say I still never thought it is such big a problem. Because I think it was like कि हमें coursework दिया है, ये काम करना है, projects हैं, limited, ठीक है, collaborate करके कर रहे थे. It wasn't very big a problem until, I was in college. Everything seemed very good, and I wasn't really able to understand कि ये इतना बड़ा problem क्यों होता है. But as I started, working and joined industry, that's when I realized this is really a big problem. And it's not like people are talking about it without any reason. So the problem is, of course, when you land into industry, there is unconscious bias amongst people, whether it's men or women. There is some sort of unconscious bias amongst people. And usually वही problem आ जाता है कि अगर women कुछ अच्छा कर रही हैं, grow कर रही हैं, promotion हो रहा है, तो लोगों को लगने लग जाएगा ये diversity candidate है, इसलिए इसको promote कर रहे हैं, इसको ये इसलिए role दिया है, इसको job ही इसीलिए मिला है because we have very few women, तो ये उस quota में आ गई, sort of वो feeling आने लग जाता है. So that creates a pressure on female candidates to kind of perform even better. And they have to deal with that pressure. So हर promotion या हर successful part के लिए they have to kind of justify themselves. वो part मैंने खुद ने भी देखा है. And also अगर हमें कुछ मिल भी जाता है तो a lot of women would have that imposter syndrome कि maybe we really did not deserve it. We just got it because we are like a diverse candidate. So ये problem, it's quite common amongst people. And then as you see, as you grow, it's like a pyramid. So, जैसे college से fresh graduates तो बहुत सारे join करेंगे. But as you grow, you see women kind of leaving this workforce, and ladder के ऊपर तो ultimately जाके कुछ होता ही नहीं है. बहुत कम मिलेंगे. Board of directors पे जाते जाते 2-3 बच जाते हैं. So you really have very few role models and mentors to look for. That's a problem for junior women because they really do not see that path. उनको लगता है कि ultimately ये कम होता जा रहा है. बहुत कम women होते हैं. Which is not the case for, the other community. For them, I think they have a lot of people to talk to. And so I would say, yeah, those are some of the challenges which create a problem. Sometimes they're visible, sometimes they're not visible. When you are in that psychological state, everything that you do is looked upon, in a different angle. So what helps in that case? Do talking to women counterparts or, even your male friends, looking at them, what can we do to make it better? Right, yeah. So I think one thing is definitely talking to more people helps because, jitna bada group hoga, people will understand your problems and they'll come up with better solutions. So talking to more people help. Talking to women help because, you will be able to discuss some of those problems and they will be able to better understand those problems because they've gone through the same stage. So if you have really good mentors, I would say mentorship is a very good thing for, junior women to have. So if you have really good mentors, they will literally pull you through all these problems. So finding a good mentor is really good.
Other thing is, I would say जितना diversity को दिखाया जाता है, I think it could be portrayed in a different way. So when you're hiring, discussion होता है कि we really need to hire 5 women out of 100 we are hiring, or we need to hire 10 women out of 100. अगर इस statement को बंद कर दिया जाए तो आधी problem solve हो जाएगी. I think that the statement has to be कि we need to hire जो candidates हैं who are crossing the bar. उसमें diverse we will interview more women candidates, but doesn't mean that we'll hire them even if they're not crossing the bar. So I think वही है कि उस statement को बार बार emphasize करना पड़ता है. I think even in Microsoft I've discussed it with my manager also, because हमारे में भी ये discussion हुआ था, let's hire more women interns. And I was into that meeting and I really felt bad. Because it was feeling like कि हाँ और women hire कर लो because वो एक कोटा है जो हमको पूरा करना है. So that I brought it up with my manager, and from next meeting, he started saying, we want to interview more candidates, but we will hire only those who cross the bar. So ultimately, who lands into Microsoft, they are all like equal in terms of crossing the bar. It's not that women are getting undue advantage. So if that is made explicit again and again, I hope that will solve problem to some extent. The other thing is solving the root cause of it. So essentially, the root cause is, maybe not in the office. It could be like in the society. So, how to change that mindset is something that, people can think about. I don't think I have a solution for it. And also, it might not be a problem that could be solved immediately. It will take years too. But I think the mindset of society in which we live has a big role to play. So does reading help to learn more about the problem, understand the problem better? Right. Yeah. Reading helps a lot because first thing is I was not really exposed to a lot of these problems that existed. I only knew about my problem and the people that I talked to. But when I read books from authors, I kind of realized that problem is not really just limited to one particular organization or one particular country. It's a problem across the world. People in US are, women in US are terribly facing this issue. So ये problem हर जगह का है. And then the books also talk about the solution, like how did those women deal with it. So those solutions, if you apply directly, that is very helpful. कुछ books recommend करना चाहोगे फिर इसी topic को लेके maybe somebody wants to look at it. Yeah, okay. Sure. So I would say some of the books women empowerment say one thing that is really coming that's one of the most recent books is by Indra Nooyi, My Life in Full. So I'm yet to finish that book, but that's like a wonderful book. I would say a lot of women can read. The other book is, so I really like that author called Brené Brown. She writes interesting books. It's not particularly about women at work, but it's about some of the feelings that women go through, about shame and, vulnerability. So all those kinds of feelings she talks about. And one of the books is The Gifts of Imperfection. So essentially, you have to embrace your imperfect self. And that's a very nice book, I would say. So, and actually, all other books of the same author, Brené Brown, she writes really interesting books. So The Gifts of Imperfection is something that I really liked it. And the other book by the same author is I Thought It Was Just Myself. It clearly says कि you're not the only one who are facing it. बाकी सब भी face कर रहे हैं. So I would say these 3 books are really, really good. Another interesting book that I could think of is from Melinda Gates, which is The Moment. So that's also a very interesting book where she talks about her challenges when she was one of the few women engineers at Microsoft. So yeah, I think ये 3-4 books बहुत अच्छी हैं. Other than that also, there are so many books outside there. What would be your parting words to somebody who is looking at, going into research? क्या बोलना चाहोगे सबको? Yeah, so I would say, usually मैं हमेशा इसी से end करती हूँ, and this is what I have been following throughout my life. 3 P's principle. It's like whether you want to go into research or go into industry or you're going to academia. I think this will help, or this is helping me all throughout. And the first P is definitely for passion. So whatever you're passionate about, just go for it. The second P is for perseverance. So if you're passionate about something, you have to really persevere for it. It's not that you're going to get it like immediately. And the third P is, I would say, patience. So all good things take time, but the wait is worth. So just wait for those things patiently.
So yeah, these three things have really helped me in life. ओके काफ़ी इंस्पायरिंग वर्ड्स सोनू काफ़ी काफ़ी अच्छा लगा तुमसे बात करके काफ़ी पर्सपेक्टिव जानने को मिले राइट इट्स नॉट दैट एवरी डे यू आर टॉकिंग टू अ हार्वर्ड ग्रेजुएट राइट एंड इतने सारे रिसर्च का तुमने काम किया है उसके बारे में तुमने काफ़ी इंसाइट दी किस तरह के जॉब ऑफर्स होते हैं किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं राइट तो आई थिंक you should come again depending on your time schedule and we can talk about other things that you are interested in right thank you so much for taking out time काफी सही लगा तुमसे बात करके thank you Thank you so much, Ankit. Thank you. Thank you. I really enjoyed this conversation. And yeah, I kind of just relived IIT J moments again. So yeah, thank you very much.